Yes, sir. Okay, all right. So let's move on, beta. Let's see one more question, which is based on the same circumpolar concept. And this will strengthen our understanding. It is again based on the rational horizon diagram. Let's see. Let's move on to the next question. To an observer, the true altitude of a star when on the meridian at upper and lower transits. So upper and lower transits tell us that this star is a circumpolar star. Only circumpolar body transits twice in a day. Transit means it passes the observer's meridian, or it comes north or south of the observer 2 times in a day. And upper and lower transit or upper and lower marpas occurs only if a body is circumpolar. So its altitude was 80 degree 9 minutes in the south bearing, southerly bearing, and 11 degree 45 minutes on the northerly bearing. Calculate its true altitude when on the prime vertical. So let's try to put all the required information in the diagram. We have the rational horizon. We mark the NESW points. We mark the center of the diagram as the zenith of the observer. Let's now put all the information given to us. Now you see the upper transit of the star was 80 degree 9 minutes south. Southerly bearing is represented by line ZS, and S point is the horizon. From the horizon 80 degrees 9 minutes away. So from S 80 degrees 9 minutes away is where 80 degrees 9 minutes away is where the star is. And the star is at northerly bearing with the altitude of 1145. Northerly bearing is represented by line ZN. So on this line ZN, from point N, which is the horizon, we come up 11 degree 45 minutes. This is where the star is. So the same star is observed at upper and lower transits in these two locations. Now the declination circle of the star should be passing from both these locations. It is the same star, and there is only one possibility of having a declination circle like that. The possibility is a circle in this particular way. So you see the declination circle of the star passing from both the positions of the star. We can draw the declination circle. Now we know at the center of the declination circle, all the declination circles are centered at the pole. So let's go to the center of this declination circle. This is where the center is, and this is where the pole is. Pole is at the center of all the declination circles. Now, once we have the pole, we can also show the equinoctial in the diagram. The equinoctial will be 90 degrees away from the pole. This is where the Q point would be, and it always passes from east and west points. So WQE is the equinoctial. Now the direction in which the body will be moving is rising from east, going in this particular direction and setting in west. So this tells us the star will also be moving in this particular direction. That is what is shown by the two green arrows. This is the direction in which the star will be moving. So beta, up to here is clear. Any doubts? Clear, sir. Yes, sir. Clear. Hai. Very good, beta.
Now they have asked us to calculate the true altitude of the star when it is on the prime vertical circle. Now what is this prime vertical circle? Prime vertical circle is the vertical circle passing from east and west points. So in this rational horizon diagram, the line WZE represents the prime vertical circle. The line NZS is called as the principal vertical circle. Not required in this question right now, but just for your information, NZS is the principal vertical circle. WZE is the prime vertical circle. So we now need to know the altitude of the star when it is on the prime vertical. So when the star is moving on its declination circle, it is going to cross the prime vertical at this particular location. So we have marked the same star when it is on the prime vertical. Let's name this as X. Now there is one more location where the star will be on the prime vertical, that is this particular location. If you want, you can pick up this location also. In both the cases, the working as well as the answer will be the same. So whichever location out of two you want can be picked up and the question worked out. So we have marked the star X here. We have the X, we have the zenith at Z, we have the pole at P. Now we can draw the PZX triangle. The missing side is the celestial meridian of this star. So let's mark the celestial meridian also. You have the celestial meridian marked as PX in maroon color. Now you can concentrate on the PZX triangle. PZX triangle. This is a spherical triangle and is a special spherical triangle because we have a right angle at Z. We have a right angle at point Z. Now what we need to know is the altitude of the star when it is on the prime vertical. So what we are going to do is, you see, we have S to this particular star, this arc known to us. We have N to this particular star arc known to us. Now I can easily find out the diameter of the declination circle of the star. The diameter will be 180 minus 1145 minus 8009. Exactly similar to what we did in the previous questions. So when we half the diameter, we get the polar distance of the star, polar distance, which is Px. So Px, the polar distance, is known to us. Go ahead with your doubts, beta, up to here. So just confirming, sir, this except for the sun, the other bodies, their definition not changed from north to south. Beta, your voice is coming little unclear. What I heard is that declination not changing. That is correct, beta. In all these rational horizon diagram, we consider that the declination of the body is not changing, unless the question specifically says that it has changed by this amount. Okay, sir. Okay. Okay, that clears your doubt? Yes, sir. Yes, sir. Okay, all right. Now, once the polar distance is known, we have the polar distance. You can follow the laser pointer on the screen. Pole to this particular star is the radius of this circle, which is the polar distance. Once it is known, we can add polar distance and 1145. When we add the polar distance and 1145, we get the value of NP. And this NP is the elevation of the pole and equal to the latitude of the observer. Once NP is calculated, NP is obtained, we can also find PZ. PZ is the colat, 90 minus latitude or 90 minus NP. So you see in this triangle PZX, the polar distance of the star is known to us. The colat, which is PZ, is also known to us. It's a special spherical triangle.
So you apply the Napier's rule and you find the side ZX. So ZX is nothing but the true zenith distance of the star. 90 minus ZX is going to give us the altitude EX. EX is the altitude of the star. It is 90 minus ZX and it comes out to be 60 degrees 20.4 minutes. डाउट है Go ahead, beta. सर जो डायमीटर ऑफ द सर्कमपोलर सर्कल आएगा तो उसका Right. हाफ करेंगे तो रेडियस आ जाएगा, पोलर डिस्टेंस आ जाएगा px. Right. pz कोलैट आ गया पर zx का Right. सर समझ नहीं आया वापस से. ओके बेटा. बेटा pz आपने फाइंड आउट कर लिया एग्जैक्टली एज वी डिड इन द लास्ट क्वेश्चन. px भी आपने फाइंड आउट कर लिया. px इज द पोलर डिस्टेंस. अब हमारे पास ये जो pzx ट्रायंगल है, दिस इज ए स्पेशल स्फेरिकल ट्रायंगल. सो अप्लाई द नेपियर्स रूल. You have two parts known to you and find out the part zx using the Napier's rule for a right angle triangle. सर ZX 90 डिग्री होगा ना सर, नेपियर्स रूल में ZX 90 डिग्री. ZX is not 90 beta. Angle Z is 90. ओके सर, एंगल Z, ओके. Angle Z is 90. ZX तो side है, so that will be certainly less than 90. सर रेडियस आने के बाद कैसे कैलकुलेट करना है? 90 माइनस दैट रेडियस क्या? आपने रेडियस निकाल लिया बेटा. px आपके पास आ गया? हाँ रेडियस आ गया सर. वेरी गुड. pz निकालने में डाउट आ रहा है? हाँ सर, pz कैसे निकालें? ओके, बहुत सिंपल है बेटा, ध्यान से सुनो. रेडियस हमारे पास है, सो फ्रॉम द पोल यू गो नॉर्थवर्ड्स अप टू द स्टार, दिस इज नोन टू यू. And from n point to the star is 1145. So add both of them, right? Yes sir. And subtract it from 90. It gives you pz. Okay. Understood sir. Yes. Okay. So you can work it out yourself now. You can work out this question. This is also part of the assignment I'll be sending you. So तब मैं आपको एक क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन भी भेज दूंगा, बट इट्स वेरी सिंपल, यू कैन वर्क इट आउट योरसेल्फ. ओके बेटा, ऑल राइट. सो यहाँ तक बेटा क्लियर है? Very good. So if it is clear up to here, then we are done with the circumpolar concept. So I'm going to close down the presentation now. Okay बेटा. अब बेटा हमारे पास जो next concept आ रहा है, the next concept is related to the twilight. हमने twilight का basics जो है ये understand कर लिया है, but how to do the twilight based numericals? Because twilight के केस में जो sun है, that is below our horizon, so it will go outside the rational horizon diagram, right? Yes sir. So हमने जो डायग्राम बनाई है वो तो रैशनल होराइजन के ऊपर वाली पोर्शन की बनाई है. So how do we show that portion and the location of the sun when it is below our horizon? So I'm going to show you that concept now. This will help us when we go ahead with the numerical questions. So let's go. Let me put up the presentation. Just give me a minute. हम भी नीचे चले जाएंगे सर. और सर्कल बना देगा उसके ऊपर. सर px का क्या बोले सर, कैसे निकालना है? लास्ट क्वेश्चन का पोलर डिस्टेंस जो था 90 माइनस पोलर डिस्टेंस में सर. बेटा आपने जो सर्कल है उसका डायमीटर निकाल लिया. डायमीटर निकल जाएगा. हाँ सर, डाया निकल गया, रेडियस निकल गया, pz तक निकल गया. रेडियस इज द पोलर डिस्टेंस बेटा, और क्या है? अच्छा ओके, जब अपर मार पास में आ रहा है सर. ओके. Radius of the declination circle is the polar distance and nothing else. Okay. Understood sir. Okay. Okay, all right.
So let me now show you the twilight concept. हाँ बोलो बेटा. इसमें लैट निकालने सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ना, जो एनपी का डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू जेड क्यू का डिस्टेंस, करेक्ट? Correct बेटा. That's right. ओके, थैंक यू। Okay. Okay, so beta we have seen the theory of twilight. ये तो हम देख चुके हैं. So I'm going to now show you how to attempt the twilight based numericals. Now we have understood the concept of twilight. One issue which we face when we solve the numerical question involving the concept of twilight is how to show this altitude of 0 to minus 18, that is negative altitude in our rational horizon diagram. So let us try to see this. We have the rational horizon diagram on the screen now. We have the NSEW point, we have the zenith in the center. Now we are aware that this rational horizon diagram represents the zone from the zenith, which is at 90-degree altitude, to our rational horizon, which represents 0-degree altitude. So all the points which are within this rational horizon circle represent the altitude from 0 degrees to 90 degrees. Now when we want to show the twilight zone in this diagram, we need to show a altitude of minus 18 up to minus 18. Let's assume a observer in latitude of 15 degrees north. So we can see the latitude coming up on the screen. ZQ represents the latitude. Let's now draw the equinoctial for this particular observer. Equinoctial always passes from the east-west points and the Q point. Now we can also show the pole here. The pole is at this location represented by P. Now when we want to show the twilight zone, which depicts 0 to minus 18 degree altitude, we are aware the zenith represents the zenith represents 90 degree altitude, and any point on the rational horizon represents 0 degree altitude. So if we want to go into a negative zone, we have to go outside the rational horizon. So this twilight zone has to be shown outside the rational horizon, which you can see in the diagram as the dotted line. So you can now easily visualize that zenith represents 90 degree altitude. As you go towards the horizon, the altitude decreases 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. At the rational horizon, it is 0 degrees. And when you go beyond the rational horizon, the altitude goes in the negative zone. The width of this particular band, which we have made, is 18 degrees because the twilight zone remains till the time the sun has gone 18 degrees below the horizon. Now let's try to show the sun also in this particular diagram. Let's assume that the declination of the sun on this particular day was 12 degrees north. So sun is 12 degrees north of the equinoctial. You can see the sun coming up in the diagram. We can now also draw the declination circle of the sun. All the declination circles are parallel to the equinoctial and are centered at the pole. So we can see the declination circle coming up. Now when the sun follows this declination circle, the sun is going to enter the twilight zone at this particular point. You can see the laser pointer on the screen. At this particular point, the sun is going to enter the twilight zone. So this is the commencement of the astronomical twilight in the morning. The twilight continues when the sun is within this particular 18 degree zone. And at this particular point where the laser pointer is right now, you have the sunrise. So this thick maroon line
represents the twilight period for the sun. Then we have the sunrise. The sun moves in the sky. At this particular point, the sun crosses our meridian. We have the Marpas. Then the sun goes west of the meridian. At this particular point, the sun goes below our rational horizon. So this is the point where the evening twilight starts. The twilight continues till the time the sun is within this 18 degrees belt. And at this particular point, when the sun leaves the 18-degree belt, the astronomical twilight ends. So you can represent these points. At point A is the commencement of the morning twilight. At point B is the ending of the morning twilight or the sunrise. Then in the evening time at point C, we have the sunset and the commencement of the evening twilight. And at point delta, the evening twilight ends and the sun goes beyond the 18 degrees belt. So this is how this negative altitude of 18 degrees can be shown in the rational horizon diagram, and it helps us to solve any numerical problems related to twilight. Now this diagram shows 18 degrees belt, which represents astronomical twilight. In a particular question, if they ask you about nautical twilight, then this belt is going to reduce to 12 degrees. And in case civil twilight question is asked to us, this belt is going to be reduced to 6 degrees width. So beta, any doubts now coming in this? Clear about this? Clear, sir. Very good beta, great. So चलें आगे. Let's see one more concept. This reduced to 6 degree with kabhi degree. Ask Sir, again beta, you are not clear. Sir, one doubt, Reduced sir. to 6 degree with kabhi degree. नहीं beta, your voice is coming very dull. Sir, this is for like lower latitudes, this diagram. No, ask again beta, one by one. ये 6 डिग्री विथ को रिड्यूस करने के लिए बोला सर, वो कभी बोला था? बेटा 6 डिग्री मैंने बोला था कि अगर किसी क्वेश्चन में वो आपको सिविल ट्वाइलाइट से रिलेटेड क्वेश्चन डालता है तो ये जो बेल्ट है दैट वुड बी 6 डिग्रीज वाइड, क्योंकि सिविल ट्वाइलाइट तो 0 to -6 तक होती है ना. यस ओके, तो सिविल बराबर सुना नहीं. Right. If they ask you about civil twilight, the belt will be 6 degrees. If they ask you about nautical twilight, the belt would be 12 degrees. Okay, understood. Okay. Sir, one doubt, sir. बोलो बेटा. सर ये PC जैसा अगर बॉडी रैशनल होराइजन पे है सर एट सी, Right. that time C will be 90, no? And when sun is at end of twilight, मतलब PD में, so that angle will be 118. ऐसा क्या? No. Angle will not be 118. मैं तुम्हें बताता हूँ बेटा कैसे होगा ये. I'll show you. Just give me a minute. 1 minute. I'll show you. Okay. So अब अगर आप यहाँ पे शो करना चाहते हो, it would be something like this. Let us say the sun is at point C. Let's make the PZX triangle. ये P to C मैंने sun का meridian draw कर दिया, and C to Z अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो ये sun का vertical circle हो गया. अब इस केस में बेटा जो ZC है, this is 90, this is 90 degrees, this will be 90, and जो PC है, PC, it will be 90 minus declination of the sun. Whatever is the declination, it will be 90 minus declination.
यस ओके ओके क्लियर हो गया? यस सर और Okay. पी अभी डेल्टा सेट में सर हाँ, अभी मैं डेल्टा भी बता रहा हूँ आपको. इसमें कुछ और डाउट? नो सर Okay, so let me erase this. I'll show you about delta now. Okay. अगर हम डेल्टा पे कंसिडर करें, लेट्स मेक द मेरिडियन ऑफ द सन एट डेल्टा. It will be like this. And also let's join delta to Zulu. So ये PZX triangle आ गई सन की एट पॉइंट डेल्टा. अब इस केस में बेटा जो पापा टू डेल्टा है वो तो बिल्कुल सेम रहेगा. It is going to be 90 minus declination. It is not going to change. But Okay. ZD 90 plus 18. Yes, ZD Okay, okay. is going to become 108. Okay. समझा सर. Okay. Okay, बेटा. Yes sir. Okay, all right. So erasing it now. ZC is 90 plus 18 degree. That's right, beta. Because this belt is 18 degrees, na? This is 18 degrees belt. Zulu to Charlie was 90. 18 उसमें add हो जाएगा. It becomes 108. Okay, great. चलें आगे. सर एक और था एक क्वेश्चन बोलो. नॉर्मली सर एमएमटी में आता है कि दे आस्क अस टू फाइंड आउट द टाइम. सो मतलब देन वी विल कैलकुलेट कि एंगल पी सी जेड में पी एंड देन पी डी जेड में पी. दैट विल बी द डिफरेंस. वेरी गुड बेटा. अगर आपको वो ट्वाइलाइट की ड्यूरेशन पूछता है तो आपके पास ये दो ट्रायंगल आ गई जो हमने अभी देखी. यस सर. इसमें छोटी ट्रायंगल का एंगल पी निकालो, फिर बड़ी ट्रायंगल का एंगल पी निकालो. ये दोनों एंगल आप निकाल पाओगे. इनका डिफरेंस निकाल लो बेटा. व्हेन यू फाइंड आउट देयर डिफरेंस, ये आ जाएगा आपके पास एंगल, पिंक कलर एंगल. यस सर. लेट अस से दिस कम्स टू 30 डिग्रीज. ये डिफरेंस जो है 30 डिग्रीज आ गया. हमें पता है सन ट्रेवल्स एट ए रेट ऑफ 15 डिग्रीज पर आवर. जस्ट डिवाइडेड बाय 15, इट गिव्स यू द टाइम 2 hours. ओके. As simple as that. 15 डिग्री 04.2 लेना. अगर स्टार हो बेटा. यस सर. स्टार अगर होगा तो अब स्टार के साथ सवाल ही नहीं बनेगा क्योंकि स्टार से तो ट्वाइलाइट होती नहीं है. अच्छा ओके. ओके. पर अगर कभी स्टार की ड्यूरेशन निकालनी हो कि यहाँ से यहाँ वो कितनी देर में गया है, सो देन यू डिवाइडेड बाय 15 2.5. ओके सर. ओके, ग्रेट. अब मुझे एक कॉन्सेप्ट और आपको बताना है बेटा. इफ एनी डाउट्स आर देयर जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी शो यू दैट कॉन्सेप्ट. सर बोलो बेटा. लास्ट स्लाइड में थोड़ा डाउट. हाँ जी, ये रही लास्ट स्लाइड. बताओ बेटा. सर यहाँ पे जो Z और C है सर, इनका बीच का जो साइड है वो 90 डिग्री ना सर. Z to C side will be 90 degrees, zenith to horizon. And sir, at the point C, altitude will be 0. Yes, at point C, altitude will be 0. It is at the horizon. Okay. Okay, great. Let's move ahead. Now, one more concept which is sometime asked in the questions is, what are the conditions for twilight throughout the night? So let me explain you with the help of this diagram, what do they mean by the term twilight throughout the night? So we have taken a particular observer. We have shown the rational horizon for this particular observer, and we have shown the 18 degrees twilight zone also going into a altitude of up to -18. Now let's assume that the declination of the sun on a particular day is this much, from point Q up to the sun. This is the declination of the sun. Now if the declination is this much, the sun is going to move on a declination circle. All the declination circles are centered at the pole, so we have the pole here. Now the sun at this particular point will be passing the meridian. After Marpas, the sun moves, and at point A we are going to have the sunset.
Now, as the sun sets, the twilight is going to commence. So we have the commencement of the evening twilight. Now you can see clearly here that the motion of the sun when it goes below our horizon from point A up to here and then going up to point Bravo. You can follow the laser pointer. From point A, the sun travels up to here at this particular point and then goes up to point B. Now when the sun reaches at point B, point Bravo, it is going to be the sunrise again and the sun is going to come above our horizon. Now the duration of the night for this particular observer is from point A going up to point B. Alpha to Bravo represents the night for this particular observer. If you observe carefully, throughout this interval, that means from the sunset at point Alpha up to the next day sunrise at point Bravo, the sun has remained within the 18 degrees belt. It has not gone below the 18 degrees belt at any time. So this tells us that throughout the night, that means from point Alpha to point Bravo, the twilight continues. The twilight does not end in between. If the declination of the sun was lower, was lesser, then as we saw in the previous slide, the sun would be leaving this 18 degree zone at some point of time, ending the twilight. But in this particular case, during the night time from Alpha to Bravo, the sun never leaves the twilight band of 18 degrees, thus making a condition in which the twilight continues throughout the night. Now you should remember the conditions which make this phenomena possible. For twilight to continue throughout the night, one thing which you can notice here is the latitude and declination should always be of the same names. This is the first condition to be met. The latitude and declination should be of the same names. The second condition which we need to meet is latitude plus declination should be less than 90 so that the sun will set. If the latitude plus declination becomes greater than 90, then you see the sun is going to fulfill the circumpolar criteria. If the sun becomes circumpolar, there will be no night. If there is no night, there is no chance of any twilight occurring. So that's why latitude plus declination should be less than 90 so that the sun is not circumpolar and the sun sets and we have night for some part of 24 hours. The third condition which should be met is latitude plus declination plus 18 should be greater than or equal to 90 degrees. Latitude plus declination plus 18 should be greater than or equal to 90 degrees. This third condition certifies that the sun doesn't go below the twilight belt. So when this third condition is fulfilled, that is latitude plus declination plus 18 greater than equal to 90, this ensures that the sun will not go beyond the 18 degrees belt or below the 18 degrees belt, and the twilight will not end at any time after sunset till the next day sunrise. So these are the three conditions which should be fulfilled: lat and dec same name, latitude plus declination less than 90, latitude plus declination plus 18 greater than equal to 90 for twilight to remain throughout the night. Any doubts up to here, beta? मतलब सर एक डाउट था बोलो बेटा सर ये लैटिट्यूड प्लस डेक्लिनेशन प्लस 18 मोर देन और इक्वल टू 90 ना सर That's right beta, more than or equal to 90.
सर ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा सर, थोड़ा एक बार बताएंगे सर? ओके बेटा, अगर इसको समझना है ना तो एक होमवर्क ले लो, एक होमवर्क ले लो। जहाँ पे ये डेक्लिनेशन सर्कल ट्वाइलाइट बेल्ट को टच कर रहा है उसको एक्स का नाम दे दो। नवंबर टू एक्स-रे इज 18 degrees, right? Sir, yes. Now the polar distance of the sun should be less than NP plus 18. Correct? NP plus 18. हाँ, okay, okay. Latitude plus 18. Okay. Right? So Yes, sir. latitude plus 18, polar distance should be less than that. क्योंकि अगर polar distance ज़्यादा हो गया तो ये बाहर चला जाएगा. So just put that here. Polar distance की जगह 90 minus dec डाल देना. You will get this relationship. Okay, understood, sir. Understood. Okay, 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 okay. Got Okay. it, sir. हाँ, मतलब Okay. approximately sir around 48.5 degrees latitude. So ऊपर रहेगा तो then it will be on the belt. Yeah, it depends upon the declination also. What is the declination of the नहीं सर, sun? अगर maximum declination 23.5 ले रहे हैं Right. तो around 48.5 आ रहा है. Yeah, that's right. That is right. Okay, okay. Understood, sir. Okay, okay. Okay. Great. Derivation की वैसे जरूरत नहीं है. The derivation doesn't come in the exam, but it's very simple. जैसे हमने circumpolar bodies का किया था, the same way it can also be found out. Great बेटा. अब इस पे कई बार क्वेश्चन आता है डायरेक्टली. What are the conditions for twilight throughout the night? So if you get a 12.5 marks question, you write the conditions. If you can make the diagram, excellent. Okay. So that will take care of it. So I'm closing the presentation now, beta. We are done for today. Sir, A to B, what we have to denote, sir? A to B is nothing, beta. A to B when the sun is moving, then it is the twilight zone. It is the twilight period. Okay, sir. Thank you. Okay. At A there will be a sunset and the twilight will start. And when it reaches at Bravo, there will be a sunrise and the twilight is going to end. Okay, sir. Sir, ऐसे भी बोल सकते हैं ना सर, sun at lower Marpas जब AB में होगा. No, lower Marpas would occur only at the point where it is touching the 18-degree dotted line. That will be the lower Marpas. मतलब inferior में है ना सर, तो वो lower Marpas में हुआ ना सर. But it is not at lower Marpas from A to B. That's a long duration. Lower Marpas happens for an instant of time. अच्छा, okay. Okay, you can say it is below the horizon from A to B. Okay, sir. Okay. Okay, great. सर बंद करने के पहले वो एक बार बता दीजिए ना, वो नॉटिकल ट्वाइलाइट का एंड ऑफ या बिगनिंग ऑफ कब लेना है सर? आपने बोला था एंड में, अगर टाइम बचेगा तो बोल देना. नॉटिकल ट्वाइलाइट का बिगनिंग और एंड क्या था बेटा? क्वेश्चन क्या था वो? सर क्वेश्चन अंकित ने भी वो डाउट पूछा था. ओके 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 गॉट इट. अभी समझाता हूँ बेटा. देखो बेटा, अगर किसी क्वेश्चन में वो सिर्फ नॉटिकल ट्वाइलाइट की बात कर रहा है, ओनली नॉटिकल ट्वाइलाइट, नथिंग एल्स इज मेंशन्ड, you take it from 0 to 12 or 12 to 0 depending upon AM or PM. Okay, so sunset to end of nautical twilight. That's right. Okay sir. अगर वो आपको ये बोल रहा है नॉटिकल ट्वाइलाइट में आपको स्टार्स ढूंढने हैं बट दे शुड बी सूटेबल फॉर साइट, अब उसने सूटेबल फॉर साइट इसके साथ एड ऑन कर दिया है. नाउ व्हेन ही एड्स ऑन दैट, यू नो सनसेट टू 6 degrees तो कोई स्टार दिखेगा ही नहीं, सो हाउ इट कैन बी सूटेबल? हाँ जी, करेक्ट. Then you ignore the 0 to 6 and you pick it up from 6 to 12. Minus 6 to minus 12 means end of civil to end of nautical. End of nautical. Okay sir. Thank you. Okay, clear now? Yes sir. Very good बेटा, done. आज आपने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट जो हैं वो सीख लिए हैं. So that basically prepares you for the question number 8 and 9. अगली क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ. We will be practicing these questions. कॉन्सेप्ट सेम है जो हमने अभी देखा है, रैशनल हॉराइजन डायग्राम एंड PZX ट्रायंगल सॉल्यूशन. So that's all from my side for today. Done for the day. Anything you want to ask or share? No sir. Okay sir. सर आप मुझे बोले थे कि एक्स मेरिडियन का ना पूछना है सर, आप जो बोल रहे हो पता चल गया बेटा? सर एक्स मेरिडियन टेबल 1 से तो मिला सर, अब टेबल 4 में जो फैक्टर लगाना है सर वो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है.
टेबल 1 से वैल्यू मिली कोई? हाँ हाँ मिल गई ना? हाँ उसी वैल्यू के साथ टेबल 4 में एंटर करो। हाँ इंटरपोलेशन की जरूरत पड़ेगी। उसके आगे जो फिगर लिखी है दैट इज द एक्स मेरिडियन लिमिट। ओके। नहीं सर, बट जो इंटरपोलेट में करूंगा सर वो टेबल 4 में करूंगा ना सर? अगर टेबल 1 में भी आपका लेट और डेक इंटरमीडिएट वैल्यूज आ रही हैं अच्छा तो आप वहां पर भी इंटरपोलेशन कर सकते हो बेटा। टू गेट ए एक्यूरेट आंसर यू शुड इंटरपोलेट देयर आल्सो। ओके ओके, मतलब दोनों लेट का और दोनों डेक का सर इंटरपोलेट करके द फैक्टर व्हाट आई एम गेटिंग देन अगेन इंटरपोलेट इन टेबल 4। दैट्स राइट, दैट्स राइट। अच्छा ओके ओके ओके। सर अभी आप Okay. बता रहे थे ना कि वो नॉटिकल वाला अगर सिर्फ नॉटिकल मेंशन किया है तो सर आप क्या लेने के लिए बोल रहे थे? जो एल्मेनाक्स में लेना है टाइमिंग वो? बेटा बेटा रुको मुकेश, ये डाउट तभी सॉल्व होगा जब तुम्हारे माइंड में आएगा। तुम असाइनमेंट करो, जब तुम्हें ये डाउट क्लियर हो जाएगा तो मैं इसका सोल्यूशन भी बता दूंगा। ओके ओके सर। क्योंकि सर पहले डाउट सॉल्यूशन समझाना और फिर उसके बाद सोल्यूशन समझाना बहुत मुश्किल है। सो डू द असाइनमेंट, द डाउट विल कम, आई विल एक्सप्लेन। सर नंबर 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक बार देखिएगा। इसका बेटा नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। सर ओके लेट मी। सर आज के टॉपिक्स कवर हो गए ना? अब बस डाउट टॉपिक्स आर डन बेटा, topics are done. If you want you can log out for today. I'm done with the topics, only picking up the doubts. ओके, थैंक यू सो मच सर, गुड डे। Okay beta, good day. सर मुझे बता दीजिए सर एक्स मेरिडियन, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मैं ट्राई कर रहा था। एक मिनट बेटा, पहले मुझे ना असाइनमेंट पे जाने दो। सर एक और रिक्वेस्ट था सर। एक मिनट, hold on, just a minute बेटा, let me open up the assignment. Okay. So असाइनमेंट में जाना चाहते थे आप? हाँ, कौन सा क्वेश्चन है बेटा असाइनमेंट में, बताओ। नंबर 5 सर। नंबर 5 ये रहा बेटा, बताओ। लास्ट में सर, लास्ट बिलो पोल का इसमें विजुअल क्यों नहीं है सर ये? बेटा बिलो पोल कोई भी बॉडी तब आपको विजिबल होगी व्हेन इट इज fulfilling the circumpolar criteria. Okay sir. Right? Declination है 38 north. What is the latitude? Latitude क्या है बेटा इस क्वेश्चन में? 52 degrees south, sir. Very good. So lat and deck are different names, so it cannot be circumpolar. So that is why not visible. Okay. Clear? Okay. Right. अब बेटा रिक्वेस्ट बताओ, क्या रिक्वेस्ट बोल रहे थे आप? सर रिक्वेस्ट ये है सर कि एक बार आप बताए थे सर वो अक्टूबर 23 का जो जीसी क्वेश्चन है ना सर, उसमें सर ये मतलब समझ में नहीं आ रहा सर, थोड़ा सा एक और बार बताएंगे सर उसको? क्या क्वेश्चन है बेटा? ऑब्जर्वर एक्स एक पोजीशन में है सर एंड देन ऑब्जर्वर वाई एक पोजीशन में है और मूविंग इन ए जीसी ट्रैक. So x moving with 13.5 and y moving with 14.5. ठीक है बेटा. X moving with 13.5 knots and y moving with 14.5 knots. Okay, all right. Now they told us to find the position where they will meet. बहुत ही सिंपल है बेटा, ये टोटल जीसी डिस्टेंस निकाल लो. Let us for an example sake it comes to 100 miles. Okay. Okay. ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, सो इनकी जो स्पीड होगी टोटल वो 13 प्लस 14 होगी या माइनस होगी, ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे रिलेटिव स्पीड में? ऐड होगा सर. ऐड होगा. सो 27 नॉट्स इनकी स्पीड आएगी. 100 माइल का डिस्टेंस है, divided by 27 you will get the time when they are going to meet. So जब ये टाइम आपके पास आ गया, अब उस टाइम को चाहे तो 13 से मल्टीप्लाई कर दो,
आपको ये मिड पॉइंट जो है मिल जाएगा. लेट्स कॉल दिस मिड पॉइंट एज m. यू विल गेट दिस टोटल डिस्टेंस. जब ये डिस्टेंस आ गया तो ये आपने ट्रायंगल बनानी है. पापा एक्सरे माइक, इसमें ये डिस्टेंस आपके पास है. पापा एक्सरे आपके पास है. इनिशियल कोर्स आपके पास है. यूजिंग दिस यू कैन फाइंड आउट pm. It gives you the colat of x. After that find angle p. It gives you the longitude of m. सर ये एक्स एम का क्या बोले सर? 13 से मल्टीप्लाई करना है किसको, जो आवर आएगा? Yeah, that's right. You are going to get some 3 hours or some minutes from here, na? हाँ, yes sir. So multiply it with 13. You get distance x to m. Okay. Use Okay, that okay, to solve okay. triangle हाँ, papa उसका x-ray क्या Mike. है? Okay. हाँ हाँ, ओके सर, ओके. Okay. All right. एक्सक्यूज मी सर, एक छोटा सा कल बोलो, मेरी क्लास बोल, में हुई थी सर. बोलो बेटा. जी सर, सिस्टम प्रॉब्लम सर. ये इसमें वैसे एक एक्स मेरिडियन ऑब्जर्वेशन का थोड़ा बता देंगे शॉर्ट में सर. क्या पूछना है बेटा एक्स मेरिडियन में? बताओ. एक्स मेरिडियन लिमिट कैसे निकालेंगे सर? तो हाँ, यहाँ पे दिया है 15 डिग्री 02.5 है, वो भी दिया है, वो बता देंगे सर क्या है? तो मैं भी आप पीछे देख अब सर वो मेरा मिस सौरभ, हो गया था सर, सिस्टम प्रॉब्लम की वजह से मिस हो गई थी क्लास मेरी आधी. बेटा ये मैं ना क्लास में अब आई थिंक चौथी या 5वीं बार बताने वाला हूँ. अब सौरभ बेटा अब इसको समझाओ नवीन को कि कैसे लिमिट निकालती है. अब ये तुम्हारी ड्यूटी है. फोन नहीं उठाता है सर, कॉल किया था मैंने, फोन नहीं उठाया. ठीक है सर, आप मैं वी विल डिस्कस. ओके ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं फिर बताता हूँ सर, बताता हूँ. थैंक यू. ओके सर ये एक्सपेरिमेंट लिमिट निकालते हैं सर ये नूरिश टेबल से, तो उसका जो इंटरपोलेशन करते हैं उसमें एक्चुअली काफी टाइम लगता है. और मैं आई हैव नोटिस दैट बिना इंटरपोलेशन के ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है, बहुत कम डिफरेंस. दैट इज करेक्ट बेटा. द डिफरेंस इज वेरी वेरी लेस एंड दे रिकमेंड मेंटल इंटरपोलेशन. वो बोलते हैं आप मेंटली इंटरपोलेट कर सकते हो. So if you are running short of time, you cannot interpolate. Take the nearest value. That will also give you very accurate answer. Very nearly the same answer. मैं जब सॉल्यूशन कर रहा था तो उसमें जैसे सजेशन, तो उसमें एक एक्स्ट्रा टेबल ऐड कर लेंगे तो बेटर होगा. ए का वैल्यू एक साथ निकाल लो, फिर टेबल नंबर 4 पे चले जाओ. ओके बेटा आप चाहो तो निकाल सकते हो, बट यू सी व्हेन यू प्रैक्टिस 6-7 क्वेश्चंस ना, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. सर वो बार बार पलटना पड़ता है ना, तो ए का वैल्यू एक साथ निकाल. You can. If you want, you can make a extra column there. ये है कि टेबल थोड़ा लंबा हो जाएगा. Already there are many columns. So, but if you want to add, yes, why not? You can. और जो हम जो suitable for observation जो है सर, वो सॉल्यूशन वाले इसमें लैटिट्यूड एंड डेक्लिनेशन की डिफरेंस लेस देन 80, वो वाला कॉलम तो ऐड किया नहीं है. तो पूछना था कि उसमें सिर्फ एक्सप्लेनेशन वो ऐड करके एक्सप्लेनेशन लिखना, आपने यही सजेस्ट किया. नो आपने बेटा एल डिफरेंस डी तो एक कॉलम में निकाल ही लिया है. सो उसके बाद सिर्फ विजिबिलिटी और सूटेबिलिटी के 2 कॉलम बना के आप उसमें यस और नो लिख सकते हो. ओके सर, ओके. क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 2 में डाउट है. ओके सो बेटा अब ओनली द लास्ट डाउट, क्योंकि आई हैव टू लीव फॉर आउटसाइड. सो बताओ और क्या डाउट है. क्वेश्चन 2 में सर जो 1 आवर है सर, 1 आवर ईस्ट ऑफ मेरिडियन, तो इसमें हमने सब्ट्रैक्ट किया सर, उसका थोड़ा कंफ्यूजन है सर. ओके सुनो, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनो. When you go 1 hour east of meridian, you are going in the easterly direction and the SHA is measured in the westerly direction. अब SHA वेस्टर्ली मेजर हो रहा है. आप अगर ईस्ट में जाओगे तो SHA कम होगा या ज्यादा? कम होगा सर. राइट? यस सर. वेरी गुड, समझ गए. ओके, थैंक यू. ओके बोलो सर, ये बेटा. सुइटेबल फॉर द राइट जो ये है, इस टेबल में हम एक दो कॉलम कम भी कर सकते हैं ना, क्योंकि बहुत लंबी हो रही है, जैसे SHA ऑन मेरिडियन या फिर डेक्लिनेशन या फिर लैटिट्यूड ऐड ना करके. बेटा वो हमने बस एक चीज का ध्यान रखना, आप चाहो तो कम कर दो कॉलम्स को,
but make sure that you do not make a mistake. These columns are added so that values are there in front of you and the answer is correct. ऐसा ना हो कि वो कॉलम निकालने के चक्कर में कहीं गड़बड़ हो जाए. If you are comfortable, you are confident, you can remove them. Like latitude जो कि सब में सेम है और जो SHA on meridian है वो भी मतलब हम ऊपर तो लिखा ही हुआ हमने. Can remove. Okay sir, thank you. सर ये मेरा डाउट है क्वेश्चन नंबर 7 में सर पी कैसे निकालेंगे? 7 में बेटा स्टार सूटेबल? यस सर 7 में. हाँ 7 में किस में डाउट है बेटा? वैल्यू ऑफ पी कैसे निकालेंगे? बेटा ये जो P है, it is the difference between SHA of the star and SHA of the meridian. ये रहे दोनों. SHA of star and SHA of meridian. P is the difference between SHA of the star and SHA of the meridian. SHA of the meridian 169, SHA of the star 158. P is 10 degrees 50.9. Yes sir. हमने ऐसे ही तो निकाला था क्लास में. हाँ ओके सर, समझ गया. सर ये एक्स मेरिडियन लिमिट अभी नहीं बता पाएंगे क्या? ये सौरभ समझाएगा आप तुम्हें. ओके सर, ठीक है सर. सौरभ को पकड़ लो. सर मैं इतना मुश्किल से समझा सर. सो आप समझ गए ना बेटा अच्छे से. अब जब तुम समझाओगे तो तुम्हारा भी स्ट्रेंथन हो जाएगा. सर एक बार आप बता दोगे तो अच्छा रहेगा सर. एक बार प्लीज बता कोई देना. बात नहीं, तुम एक बार ट्राई करो, मैं बता दूंगा. ओके, अगर नहीं समझ में आएगा नेक्स्ट क्लास में आई विल टेल यू, बट ट्राई इट वंस. ओके सर. क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट था. क्वेश्चन नंबर 9 में नंबर 9 बेटा ये ओके ठीक है. अब बेटा लास्ट डाउट ले रहा हूँ. आई हैव टू लीव फॉर सम प्लेस. लास्ट डाउट. ओके नंबर 9 ना, ये रहा बेटा नंबर 9. यस सर इसमें मैं डाउट मेरा ये था, इसमें सर ये जो मार्स का जो डेफिनेशन निकाला है सर वो कैसे निकाला गया सर? मैं इसमें एल्मनाक में देख रहा था तो मुझे मिला नहीं. मार्स का डेक्लिनेशन 929.7. ओके बेटा ये जो ऑब्जर्वेशन है ये 1800 to 1900 में हम ले रहे हैं, राइट? यस सर. सो आप एल्मनाक में जाओ 21 सितंबर 92 को. मुझे बताओ 1800 पे मार्स की डेक्लिनेशन क्या है? सर मार्स की डेक्लिनेशन, मार्स की सर 21 सितंबर में 1800 का सॉरी 1800 इज शिप्स टाइम बेटा. सॉरी GMT इज 1000 आवर्स. सर GMT 1000 आवर्स सर ये सर शो कर रहा है सर. ये नॉर्थ 23 डिग्री 28.1 मार्स की डेक्लिनेशन. यस सर. एल्मनाक कौन सा है? 92 है. 92 है सर. 92 है. इज इट रॉन्गली मेंशन्ड हियर? हाँ सर उसके लिए मैं डाउट में था. मैंने कहा कैसे आ रही है. इज द SHA करेक्ट बेटा? सर SHA हाँ बराबर है. SHA इज करेक्ट. ओके तो हो सकता है फिर इसमें मिस्टेक हो बेटा. दैट्स पॉसिबल. एनीबॉडी एल्स सॉल्व दिस क्वेश्चन? ओके नॉट येट. तुम इसको ग्रुप पे फ्लोट कर देना बेटा. ग्रुप पे इसको फ्लोट करना. if somebody else solves it then he will confirm it to you. ओके सर. ओके ऑल राइट. ओके बेटा, सो आज के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं बेटा. बाकी के जो डाउट्स होंगे यू कैन शेयर देम ओवर व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में उनको पिकअप कर लेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बेटा. थैंक यू. बाय बाय. थैंक्स सर. नेक्स्ट क्लास मतलब अभी 3-4 दिन तो नेक्स्ट क्लास नहीं है ना सर, शेड्यूल के हिसाब से? एज पर शेड्यूल बेटा. या पर शेड्यूल ना सर. तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 5 का एटलीस्ट सर ये स्टैगर्ड का जो है ना सर उसका थोड़ा एक बार रिवीजन हो सकता है क्या सर? आई विल फर्स्ट कवर द कॉन्सेप्ट, उसके बाद कर लेंगे बेटा टुवर्ड्स द एंड. ओके सर. ओके स्टैगर्ड में कॉग्ड हेड का. ओके सर. ये ओके अब मैं कुछ कमिट नहीं करूंगा बेटा.
We will see in the next class. Depending upon the genuinity of your doubts, I'll see कि तुम क्यों पूछ रहे हो वो doubt. I'll have to see, yeah. Okay. Okay. Okay, beta. Bye bye. Bye, sir.